So hello guys, welcome back to the channel, and we are on a question number 20 of Striver CP sheet. So let's see what the question is, and the question title is C plus equal to. So yeah, Leo has developed a new programming language, C plus equal to. In C plus equal to, integer variable can only be changed with a plus equal to operation that adds the right hand side value to the left hand side variable. तो पुराने वाला ऑपरेशन है उसके बारे में बताया गया कि a plus equal to that would change into a equal to a plus. So for example, performing a plus equal to b, when a equal to b, b equal to 3, change the values of a to 5, the value of b does not change. तो a plus equal to b इसको हम कैसे ले सकते हैं, a equal to a plus b. So yeah, सेम चीज बताई है. In the prototype program, Leo has two integer variables a and b, दो वेरिएबल दिए होंगे उसको. Okay, initialize with some positive value, जिनको कोई पॉजिटिव वैल्यू दी होगी. He can perform any number of operation a plus equal to b या b plus equal to a. कोई भी ऑपरेशन कर सकता है, a में b जोड़े या b में a जोड़े, does not make any sense क्योंकि दोनों कॉम्पिटिटिव है. बट फर्क ये पड़ता है कि a को दी जा रही है वैल्यू या b को. Leo wants to test handling large integers, so he wants to make the value of either a or b strictly greater than the given value n. ए और बी में से किसी भी एक की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द एन, एन से बड़ी बनाना चाहता है. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन ही हैज टू परफॉर्म. ओके, लेट्स सी. इनपुट दिया, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर t where t is the number of test cases. टेस्ट केसेस आ गए हमारे पास. Each of the following t line describes a single test cases and contains three integers which are a b and n. तो तीन इंटीजर दिए होंगे, हमें a दिया होगा, b दिया होगा, n दिया होगा. एंड इनिशियल वैल्यूज ऑफ a और b. a पता है आपको, b पता है, n क्या है जिससे बड़ा हमें बनाना है नंबर. सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट. तो 1 2 3 हमें मिला हुआ है, तो 3 से बड़ा बनाना है. तो 1 प्लस 2 विच इज 3, 3 इज इक्वल टू 3, नॉट ग्रेटर देन 3. तो अब 3 तो आ गया, दोनों का सम करके. अब 3 असाइन किसको करें. नाउ दैट्स द मेन प्रॉब्लम, दैट्स द गोल ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो 3 अगर मैं इसको असाइन करता हूँ, तो दैट वे नेक्स्ट टाइम वी आर गोना एडिंग 3 प्लस 2. और अगर मैं 3 इसको साइन करता हूँ तो वी आर गोना ऐड 3 प्लस 1. तो कम को साइन करते हैं ना, हमें तो वैल्यू बड़ी बनानी है ना. सो जो भी कम है उसको 3 असाइन कर दो. तो 3 इसको असाइन करेंगे, 3 प्लस 2 इज 5, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो इन 2 steps. So yeah, that's it. Let's try coding it. This one's from our last video, go check it out. And so what we have given t a b n. So let's code it. And we have given t and while for all the test cases, we have given a b n. थोड़ा भी हाथ जमा नहीं है इस कीबोर्ड पे मेरा. a b n n. So yeah, a b n n. And what we need to do, we need to give the count. So while a is less than n and b is less than n, जब तक ए और बी दोनों कम है तब तक हमें जो भी ऑपरेशन है करना पड़ेगा. तो दोनों का सम चाहिए मुझे, ठीक है. दैट इज ए प्लस बी. अब डिपेंड करता है मैं उस सम को किस में साइन करता हूँ. तो इफ ए इज लेस देन बी, तो छोटे वाले को खत्म कर देते हैं ना. तो ए वुड बी बिकम सी, एल्स बी वुड बिकम सी, एंड द काउंट विल इंक्रीमेंट. तो या ए एन से भी छोटा, बी एन से छोटा, उसके बाद नहीं आता तो सी आउट करो काउंट, print the end elf for the next line. That's how we need the output, right? So yeah, that's it. Let's copy the code. Let's try running it. Let's try running the test case, and answers are 1 and 7. 1 which are wrong. Why so? 2 plus 1 which are 3. Okay, so it also shows the equal to, we need to get the strictly greater, right? So 2 and 7 make sense. Let's download it, the 20th file. When will I stop making these silly mistakes? So let's try submitting it. So yeah, passed with the flying colors. So yeah, that's it for today's videos, guys. See you in the next one.